My parents don't know that I'm doing this, and if you guys are watching, I'm sorry. I had to do this because बहुत हो गया यार, बहुत हो गया. ये चीज़ नवंबर एंड से चल रही है एंड अभी मार्च है, तो 4-5 महीना हो गया है एंड इट्स हाई टाइम दैट आई स्पीक अबाउट इट. जैसे कि कोई मुझे धक्का दे के उठा दिया एंड उठा के चला गया एंड मुझे कुछ गंदी चीज़ें बता के गई. पता था कि समवन इज हिटिंग मी ऑन माई हेड. मैं उधर जाती थी एंड I don't know what it was. I used to just cry. It's Sunday, 17th of March, and currently it's 6:50 a.m. And usually I wake up by this time. I have my morning drink, and I set a few things in the house. थोड़ा साफ सफाई करना. But today I thought that no, let me just do this, and I'll tell you why am I doing this. What is the reason? So stay tuned. वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप मैं ये सारी बातें और इंट्रोडक्शन बहुत हंसते हुए दे सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट इन दैट स्टेट टू डू. बट द मेन एम of this video is not to gain attention or to victimize myself and just gain views. Whatever I am going to share, it's going to be heart to heart. And there are two reasons why I am sharing all of this. The first reason is there is not enough awareness, and it's just that you might think that mental health issues are something which only this population of people can have or certain people can have. But let me just bring this out to you. Maybe the one sitting next to you is having a mental health issue, is not doing well mentally. Maybe your neighbor, your sister, your brother, your cousin, your sibling, your mother, your father, and or maybe your friend, even they might be suffering. And I was a little skeptical when it came to sharing my own story. Like when I thought that I'll just do this, but then I thought that what better than just sharing my own story, because I'll be able to describe everything which I felt. So here it goes. I don't know whether I'm able to, structure this video. Whatever is coming on my mind, I'm just randomly sharing. So I hope you all make it till the end of the video. I'm not doing the self diagnosis here, although I am a psychologist. But yeah, I can say that I'm having anxiety issues. Anxiety, trauma, and so many other things. I don't want to put this out technically. I just want to make it heart to heart where you guys can actually connect and understand that how does it look like, how does it feel to not be doing good or well mentally. And of course, like I said, the reason why I'm sharing here is, as a psychologist, when we go through case studies, we take up cases. Even previously, I've seen in my internship days, and so many times that we understand with the issues the client is having, we empathize with the client. But the reason here why this video is going to be so personal is because I have gone through each of the incidents, each of the symptoms, and I know how exactly does it feel like. And coming out from a very personal point of view and sharing this with y'all and is a big thing for me. But the whole purpose is to raise awareness, number one, and number two, if I am able to do it, everyone is able to do it, I feel. And yeah, I had started to take a couple of breaks from my office in order to deal with my mental health. क्योंकि अभी I'll come to the signs and symptoms I had started to face actually. I might be a little emotional because here I am directly delving into the things I went through. And of course, while explaining, I'm gonna have the flashbacks. So, yeah. Let me tell you a little bit about work. I am working as a therapist, a psychologist with a neurodivergent population. तो मेरे को
काम पे जाना बहुत पसंद था, अभी भी पसंद है, बिकॉज देयर आर चिल्ड्रन इन्वॉल्व एंड no matter what it is, children always make you feel better, children always make you feel good. तो मेरे दिमाग में ऐसा कभी नहीं था कि आई विल स्किप वर्क, बट जस्ट टू पुट लिटिल लाइट, मैं सुबह उठती थी एंड देयर वाज अ फॉग, देयर यूज्ड टू बी कंप्लीट फॉग दिस एरिया. ऐसा लगता था कि समवन इज हिटिंग मी ऑन माई हेड एंड बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रहा है. देयर आर सो मेनी पीपल स्पीकिंग टू मी, सो मेनी थिंग्स आई हैव टू गेट डन एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हाउ आई कैन हेल्प माई सेल्फ एट दैट पॉइंट. आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज माई मेंटल हेल्थ. सो आई थॉट कि कृष्टि यू हैव टू टेक अ लीव. तो मैंने लीव लिया एंड थॉट दैट आई एम गोना deal with what is affecting me, because I have always dealt with things in a I've always dealt with things in an appropriate manner. कि डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, डोपामिन के पीछे भागना नहीं है. लाइक आई एम नॉट डूइंग वेल तो चलो ट्रिप पे जाते हैं, ऐसा नहीं है. नॉट फीलिंग वेल तो चलो लेट्स फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग. तो being a psychologist, I always took the correct path. During the days when I took leave, I used to involve in a lot of self reflection. अपने डायरी, अपने जर्नल में मैं लिखती थी what are my current thoughts, what am I exactly feeling. I was trying to be more aware. I was putting it down on a paper just to reflect कि कहाँ से आ रहा है and how I can help myself. And जब I was taking a leave, I was doing the same thing. I was pampering myself also with good food, desserts and everything. कि Krishti, you deserve it. But things were happening in episodes. जैसे I have always known about these issues. I've read, I've seen other people going through this, my clients going through this. But खुद पे जब आया, I always understood it, empathized with my clients and understood the depth of it. But when I was going through it, that was the end, I will say, for me. But good thing about me, I never gave up. And I knew that I can come out of it, because similar things had happened with me. Like, in not similar things, but I've been through bad times even in 2014, 2015. And I always remind myself that if 14-year-old Krishti can do it, 15-year-old Krishti can do it, 23-year-old Krishti can also do it. So I was trying, I was doing, I was never giving up. I never told the specific reasons to my parents, but I was telling them कि I am not doing well mentally and emotionally. Few of my friends were, my 2 to 3 of my friends were aware of it, and whenever I used to text them or call them, they were just a call. They were just a call away and or a text away. I'm really grateful to them for always responding to my texts, my calls. But every day I thought that I'm taking a step, I'll be better. But मैं वो better नहीं देख पा रही थी, क्योंकि it used to happen like this कि the days where I was okay in the morning, suddenly कुछ तो होता था दोपहर को, and I'm working in the middle of my work, middle of my schedule, has to break down, and the only place I had was my workplace washroom. मैं उधर जाती थी and I don't know what it was. I used to just cry. And my chest, I felt that my chest will burst literally. I am unable to take. Felt that my head will burst. And I knew it early symptoms क्या है. Like, it will initially start with me feeling a little bit uncomfortable, anxious. फिर my legs would start shaking, trembling. And फिर that anxiety कि नीचे से, this is suppose me, my leg नीचे से ऐसे ऊपर जाएगा, and parallelly side by side यहाँ और यहाँ I used to feel very very heavy. तो फिर ऐसा होते गया कि every day it used to happen.
एंड मुझे नहीं पता था कि कब कब होगा, अचानक इट यूज टू हैपन। जैसे मॉर्निंग में कभी कभी हो गया, आफ्टरनून में, समटाइम्स इट यूज टू हैपन कपल ऑफ टाइम्स। मैं सपोज कहीं पे जा रही हूँ, घर से कहीं पे या फिर उस जगह से घर पे, द क्रिस्टी हु यूज टू लव टू वॉक सो मच, शी हैड स्टॉप्ड वर्किंग, क्योंकि इतना एंजाइटी था कि मैं चल ही नहीं पाती थी। मैं लेग्स वुड शेक और मैं ऐसे ऐसे चलती थी। एंड मैं बस ऑटो बुक करती थी, आई यूज टू सिट इन दैट ऑटो एंड आई यूज टू जस्ट क्राई। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन देख रहा है, बाहर के लोग देख रहे हैं या फिर ड्राइवर इज वॉचिंग मी, हूएवर इज वॉचिंग मी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज आई फेल्ट दैट आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ माई सिचुएशंस। तो I and that's the worst thing that can happen to me. I always like to be in control, and not only me, everybody likes to be in the state of equilibrium. और ऐसा होता है कि when that equilibrium is disturbed, that state is disturbed, we all feel uncomfortable. मेरे साथ भी वही हो रहा था। And fast forward to 2024, last week of January, I decided to take my first therapy session. The decision was not बहुत पहले का लिया हुआ कि आई हैव टू स्टार्ट थेरेपी। वन मॉर्निंग आई वेक अप एंड बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था मुझे। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई वाज फीलिंग हेल्पलेस, मैं रो रही थी। माय बॉडी, फॉर मी इट हैपेंस कि जब भी एंजाइटी होता है इट विल शो अप एज सोमैटिक सिम्टम्स एज इन आप उसके इफेक्ट बॉडी पे देख पाओगे। लाइक फीवर आ जाएगा, कफ आ जाएगा, मैं खड़े नहीं रह पाऊंगी, एंड माई बॉडी वुड शेक एंड ट्रेम्बल एंड very similar to a seizure. Things like that would happen. And it happens ऐसा कि आप रोते भी हो ना, रो that there's a different level of pressure and that, what do we call it, आप थक जाते हो। in layman terms आप थक जाते हो, कितना ही आप रोगे, and you don't know where the tears are coming from, why is it happening, and it's not under your control। ऐसी वाली फीलिंग थी। एवरी डे आई यूज टू क्राई एंड कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं था दिन में। क्राइंग, इट्स नॉट अबाउट क्राइंग, क्राइंग स्पेल्स आते थे मुझे। इफ़ यू डोंट नो व्हाट क्राइंग स्पेल्स आर, जस्ट गूगल इट, यू विल अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन क्राइंग एंड क्राइंग स्पेल्स एंड पैनिक अटैक्स एंड क्राइंग स्पेल्स माई एंटायर डिसम्बर एंड जनवरी। एंड फिर वन मॉर्निंग आई रिमेंबर एट 7:30 आई वॉज ऑन माई फ़ोन, मैं सर्च कर रही थी कि आई नीड थेरेपी, अभी मुझे बात करना है, क्या करूँ मैं, आई नीड राइट नाउ। आई वॉज अवेयर कि क्लिनिक्स तो उतने टाइम में नहीं, दे डोंट ओपन एट 7:30, आई वॉज अवेयर ऑफ इट, आई न्यू इट, आई वॉज हेल्पलेस। मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि कृष्टि, लेट द क्लिनिक ओपन बाय 10:30, एवरी क्लिनिक इज गोइंग टू बी ओपन, यू विल गेट योर थेरेपी सेशन, for now calm down। I remember I was feeling so weak, I had to order ORS and other stuff। मेरे में इतना भी एनर्जी नहीं था कि मैं नीचे जाऊँ और जाके मैं लेकर आऊँ वो सारी चीज़ें। I couldn't open my eyes and मैं सो नहीं पा रही थी। मेरे सपने में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी एंड मैं रात को, लाइक इफ़ आई स्लेप्ट एट अराउंड 11 और 12 एंड मैं सुबह उठती थी 6 बजे, वो 11 से 6 बजे के बीच में हैज़ टू वेक अप 4 to 5 टाइम। जैसे कि कोई मुझे धक्का दे के उठा दिया एंड उठा के चला गया एंड मुझे कुछ गंदी चीज़ें बता के गई एंड मैंने वो सुना एंड अभी मैं हेल्पलेस हूँ। मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। आई डोंट नो हाउ टू काम माई सेल्फ डाउन एंड पुट माई सेल्फ बैक टू स्लीप। मैं यूट्यूब पे जाके फ़नी वीडियोज़ ढूंढती थी, स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोज़ मैं ढूंढती थी, मैं डाउनलोड करके रखती थी कि क्योंकि मुझे पता चल गया था कि एवरी नाइट इट हैपन्स। तो मेरा ऐसा था कि मैं एक एक रात के लिए 9 to 10 फ़नी वीडियोज़ या फिर कोई और वीडियोज़ मैं डाउनलोड करके रखती थी, क्योंकि वो 5-6 बार मेरा नींद खुलेगा, आई नो, एंड जब भी खुलेगा मुझे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, अपने आप को, आई हैव टू पुट माई सेल्फ बैक टू स्लीप, बिकॉज मेरे को नेक्स्ट डे काम पे भी जाना है एंड मैं बहुत सारे लीव्स ले चुकी हूँ। बहुत सारे मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई एम नॉट समबडी हु विल टेक लीव्स लाइक दैट। तो
आई नो उस दिन मैंने अपने आप को बोला, कृष्टि forget it, you don't have to go for work today, you are unable to go, so don't go for work today, you'll get a session. जब तक कि 10:30 ना बजाओ, I was just calming myself down कि it's okay कृष्टि, let the clock strike 10:30, you will get to book a session. And I did that, and abhi I'm healing. Not that things are very much better now, but I am healing, I am in that process. And मैं इसीलिए ये फिल्म कर रही हूँ because I want to document it. One of the hardest and the toughest phase of my life. So to raise the awareness कि होता है ऐसे, तुम्हारे अपने के साथ ही होता है. Maybe you don't know, but these are very common things. And ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट में आई विल शेयर विथ यू what are the things I'm doing, what are the strategies I am employing to keep myself healthy mentally, physically, mostly mentally. And how are things now? In short, if I tell you, things are not very good now, but I'm trying. ये एपिसोड्स ऐसे होते हैं कि आपको नहीं पता होता है कि कब आपके वो क्राइम एपिसोड स्टार्ट हो जाए, कब आपके एंजाइटी वाला एपिसोड स्टार्ट होगा. You are okay, you're fine, you're just watching something, and just one fine minute you're not okay. And I'm somebody, one more thing, I'm somebody who loved staying alone, living alone. Like मुझे बहुत पसंद है, मेरे को किसी के साथ रहना पसंद नहीं था, अभी भी नहीं है. And I loved staying alone. मुझे कोई नहीं चाहिए होता है. My me times were my best time. मैं कोई भी थ्रिलर मूवी या फिर कोई भी एपिसोड शार्क टैंक का या फिर किसी भी सीरीज या फिर मूवी आई यूज्ड टू पुट ऑन माय लैपटॉप, एंड मैं ब्राउनी, आइसक्रीम, स्नैक्स, चिप्स, अच्छा खाना ऑर्डर करके आई यूज्ड टू वॉच इट, आई यूज्ड टू वॉच दोज, एंड दैट वाज माय मी टाइम. अ लॉट ऑफ सेल्फ केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, यही मेरा सेल्फ केयर था. एंड दैट कृष्टि डिड नॉट लाइक स्टेइंग अलोन. मैं हमेशा कॉल करती रहती थी. आई रिमेंबर गो टू माई कॉन्टैक्ट्स एंड मैं ढूंढती थी कि अभी किसको कॉल करूँ, किसको ये सब बोलूँ तो समझ में आएगा. एंड आई टू कॉल माई पेरेंट्स, टू कॉल माई फ्रेंड्स, 2-3 फ्रेंड्स ऑफ माइन. बट ऐसा हो रहा था कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, वाई डू आई फील लाइक दिस. एंड द कृष्टि हु लव स्टेइंग अलोन, उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि शी नीड्स पीपल टू टॉक टू हर. क्या ये मैं सिर्फ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रही थी, या फिर मेरे अंदर जो चल रहा है वो पता करने के लिए कर रही थी? वॉट वॉज इट बेसिकली? पार्टली मुझे पता था कि ये एक रीज़न की वजह से हो रहा है, बट आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट क्योंकि कृष्टि वॉज नॉट लाइक दैट. बट आउट ऑफ एवरी थिंग आई जस्ट अंडरस्टूड ये कि मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं था in whatever I am in or whatever I am going through. And it is okay, there are bad times in people's life, there are bad phases in people's life, and there are people who are fortunate जिनकी लाइफ में अभी तक नहीं हुए and होना भी नहीं चाहिए, and then there are people जिनकी लाइफ में हुए हैं. And let me just tell you these things, few things की sorry, trauma does not make somebody stronger. No, just because I have a trauma doesn't make me stronger. नहीं चाहिए था मुझे, क्यों चाहिए? If I can live my life with lessons which are beautiful, lessons about the world, that there are beautiful people, there are good human beings, the world has so many opportunities, the universe is good and everything, तो फिर क्यों मुझे ऐसे lessons के साथ जीना है कि यार तुम लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, लोग तो ऐसे ही होते हैं, लोग जेन्युइन नहीं होते, and people are gonna hurt you and stuff like that. क्यों मुझे, why I wanna live with lessons like this? But anyway, that's a different thing. ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है and I would like to make a part 2 of this video क्योंकि मुझे शेयर करना है. मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कि who is watching, who's not watching. But when I describe this, I want you all to understand that it is more than what you think the other person is going through. Maybe we empathize with a person कि यार इसको ये issues है, she is going through something, but
It is more than what you see, it is more than what you realize. Because the one who goes through it, only he or she knows that how he or she felt and what is happening to her. So yeah, I will come up with a part two. So if you've been if you've come this far, thank you so much for watching.